The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with India to International and make your NDMS and MBBS dreams come true. Hello and a very good evening to all the MBBS, BDS, BSc nursing aspirants 2023. All the NEET qualified candidates kindly take a note of uh, MCC counseling schedule. It still shows अभी भी ये यही दिखा रहा है टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग 2023 बट ये स्केड्यूल लगभग फाइनल लग रहा है. यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस स्केड्यूल ऑन एमसीसी ऑफिशियल वेबसाइट and coming quickly onto the dates, the registration begins from 20th of July to 25th of July. So they have given us 6 days, that is 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, and 25th. And the registration is up to 12 noon as per server timing. And the payment facility will be available till 8 p.m. of 25th of July 2023. Choice filling starts from 22nd of July till 26th of July. Okay. And the choice locking will be available from 3 p.m. of 26th of July. Okay. So choice filling can be done from 22nd of July to 26th of July up to 11:55 p.m. Okay. And choice locking will start on 3 p.m. 26th of July. So processing of the seat allotment, they have given 27th and 28th of July, and the result for the first round will be on 29th of July. So I believe the result should be out by 28th of July evening itself. 28 जुलाई शाम को ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा जनरली हो जाता है. दे रिलीज अ टेंटेटिव रिजल्ट, दैट इज प्रोविजनल रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं. वो 28 जुलाई के शाम तक आ जाएगा राउंड वन का. एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन 29th of July. Now, uploading of the documents by the candidates on the MCC portal. Now, this is uploading of the documents by the candidates on the MCC portal is by 30th of July. That means you need to upload your documents. Okay. Now reporting and joining is from 31st of July to 4th of August. That is, 4th is the last date to report to the allotted college whether you want to go for upgradation or whether you want to take a final admission in that particular given college in the round one. And verification of joint candidates data by the institute, sharing of the data is up till 6th of August. So wherever you report to the फर्स्ट राउंड कॉलेजेस, जहाँ पे भी आपको सीट मिलता है, आप राउंड वन में जाते हैं तो आपको एमसीसी एक लेटर, एमसीसी सर्वर से एक लेटर मिलता है, एंड विच says that you have been admitted to this candidate and this respective institute. When you go and report to the college, जब आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको एडमिशन फ़ी भरने के बाद आपको एक लेटर दिया जाता है जो एमसीसी के द्वारा होता है, विच कॉलेज, दैट अलॉटेड कॉलेज आपको देता है. एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन तो उसमें लिख के आ जाता है कि कैंडिडेट इज़ विलिंग टू गो फॉर अपग्रेडेशन. अदरवाइज आपका अगर फाइनल एडमिशन फर्स्ट राउंड में जो आपकी मनपसंद सीट अगर आपको मिल जाती है, आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं नहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें क्लियरली लिख के आ जाता है फाइनल एडमिशंस, दैट इज द कैंडिडेट हैज रिपोर्टेड टू द इंस्टीट्यूट एंड ही डजंट वांट्स टू गो फॉर अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं. सो 4th अगस्त तक आपको अपनी फॉर्मेलिटीज कैसे भी कंप्लीट कर देनी है राउंड वन के कॉलेज में जाके एडमिशन लेके. अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो भी आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको वो सीट लेनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन अपग्रेड. एंड इफ यू डू नॉट विल टू ज्वाइन द कॉलेज एंड यू वांट टू ट्राई डायरेक्टली इन सेकेंड राउंड, आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में ट्राई करना चाह रहे हैं, तो किसी कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज फर्स्ट राउंड इट इज़ ऑलरेडी ए फ्री एग्जिट. एंड द इंस्टीट्यूट रोल इज अप टिल 6th of August. जो भी बच्चों ने रिपोर्ट किया है, नहीं किया है,
या अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, वो एमसीसी को इन्फॉर्म करना है रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स को बाय 6 अगस्त 2023. Now here we see a new column. यहाँ पे एक नया कॉलम दिख रहा है, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट ऑन द एमसीसी पोर्टल. सो डेफिनेटली 28th को ही रिजल्ट आ जाएगा, प्रोबेबली प्रोविजनल रिजल्ट तो 28 जुलाई को शाम को आ जाना चाहिए राउंड वन का. Result, final result will be on 29th of July. So 30th of July, I believe they will be giving you an uh, a time slot where you need to upload your documents. So what will be these documents? We need to have a clear idea on this. We'll definitely update you what documents will be required, but probably it will be NEET admit card, NEET scorecard, your 10th mark sheet, your 12th mark sheet, your 12th passing certificate, और आपके आधार कार्ड का एक कॉपी ले लिया जाएगा 100%. And if there's a caste certificate you want to if there's a class caste validity या caste certificate, if it's applicable, if you belong to any particular caste, SC, ST, OBC और PWD even, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे एमसीसी वेबसाइट पे 100%. ओके, एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट and complete your formalities by 4th of August. I hope this is very clear. I hope मैं आपको समझा पाया. So the first round begins from 20th of July. आपके रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे 20 जुलाई से. 25 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोपहर के 12 बजे तक. हालांकि पेमेंट फैसिलिटी 8 बजे तक दी गई है. आप 25 जुलाई को 8 बजे के पहले भी पेमेंट कर सकते हैं. चॉइस फिलिंग आपकी शुरू हो रही है 22 जुलाई से, जो चलेगी 26 जुलाई के शाम के रात के 11:55, that is midnight. Okay, and choice locking will be available from afternoon 3 p.m. to midnight. ओके, लॉक अगर आप करना भूल भी जाते हैं, आप चिंता नहीं करते हैं, जो भी ऑप्शंस आपने भरे हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, तो लॉकिंग की ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं आप. प्रोबेबली 28 जुलाई शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड प्रोविजनल रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट 29th of July. 30th जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी एमसीसी इंस्ट्रक्ट करता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स 100% वो आ ही जाएगा, हम आपको बता देंगे. रिपोर्टिंग एज आई टोल्ड यू 4 अगस्त तक. अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो आपको अगर डर लग रहा है मेरी ये सीट छूट ना जाए, तो आप फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट करिए और अपग्रेडेशन के लिए जाइए सेकेंड राउंड में. अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 5th और 6th अगस्त कॉलेजेस का रोल है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल है, जो कंप्लीट डेटा अपनी रिपोर्टिंग का सबमिट करेंगे एमसीसी को. So this is a very good news. So this is still they say it is a tentative schedule, but मैं समझता हूँ ये final schedule ही है ना. So let's go now. Second round begins from 7th of August, okay, 2023 to 8th of August, okay. The registration facility will be available from 9th of August to 14th August, and which again this is 6 days, 6 दिन इन्होंने दिए हैं. And 14 अगस्त 12 बजे तक दोपहर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पेमेंट वैसे ही 8 बजे तक आप 14 अगस्त तक कर सकते हैं. चॉइस लॉकिंग आपकी शुरू हो जाएगी 10 अगस्त से, एंड चॉइस फिलिंग आपकी शुरू हो जाएगी 10 अगस्त से. 15 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 11:55 तक. एंड चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 p.m. ऑफ 15 अगस्त टू 11:55 p.m. of 15 August. Probably the provisional result will be coming on 17th of August 2023. Final result जो आएगा 18 अगस्त तक आ जाएगा. एंड uploading of the documents again it is given here on 19th of August, and from 20th of August to 28th of August reporting time दिया गया है. So this is a very big time from 20th of August to 28th of August. 20 अगस्त से 28 अगस्त तक रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है. इंस्टीट्यूट्स को अपना पूरा डेटा 30 अगस्त 2023 तक कैसे भी सबमिट कर देना है. So moving ahead for the third round registration begins from 31st of August, and till 4th of September. The registrations are open, and this is for the mop-up round. Okay, and choice filling will be starting from 1st of September to 5th of September, and
probably the provisional result will be out by 7th of September. 8 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे भी एक ही दिन दिया गया है, 9th ऑफ सितंबर. एंड रिपोर्टिंग आपका 10th ऑफ सितंबर टू 18th ऑफ सितंबर रहेगा. Okay, so this is a very good news. MCC has declared its schedule, and coming up for the stray vacancy round, there will be no fresh registration, and it is only for the candidates who have already registered in first round, second round, and mop up round. जिन बच्चों को कोई सीट नहीं मिली है तीनों राउंड में, they will be eligible for stray vacancy round. Okay, किसी भी राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिला है तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में. एंड चॉइस फिलिंग यहाँ पे बताया गया है 22nd ऑफ सितंबर टू 24th ऑफ सितंबर. एंड reporting is till 30th of September. So last date will be approximately for the admissions across India should be on 30th of September. The September 2023 should be the last date of admissions across all the institutes, across all the private or deemed or government medical colleges, dental colleges, BSc nursing colleges. And I hope this information was useful to you. Thank you for watching this video till the end. God bless you all. Thank you.